Okay, so good evening everyone. This is Samarth, and as you know that we'll be covering determinants today. We've already covered matrices in the previous lecture. So आज हम determinants complete करने की कोशिश करेंगे. तो पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि determinants का idea कैसे आता है, कैसे नहीं आता है. So development of according to the theory, you just read it through and get. I'll explain it. What does it actually mean? So development of determinants took place by when mathematicians were trying to solve the system of simultaneously linear equations. Okay. तो उसमें ये कहना है कि अगर जब साइंटिस्ट लीनियर इक्वेशन सॉल्व करे थे तो दे केम अक्रॉस अ पैटर्न, राइट? अगर जैसे कि हमें दो इक्वेशंस दे रखी है, आई एम नॉट राइटिंग, यस, दिस एंड दिस इज इक्वल टू, सॉरी, ये दो इक्वेशंस है और हम इनको सॉल्व करना है, एक्स वाई निकालना है, राइट? तो इसको इसको बहुत साइंटिस्ट सॉल्व कर सकता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स, राइट? So उनने mathematicians defined the symbol determinant and it is a way of representing numbers, and that numbers उनको solve करने पर हमें एक special equation मिलती है basically. So अगर आपको पता हो determinant of a1 b1 and a2 b2 gives us a1 b2 minus a2 b1, right? So basically determinant is just a representation of this equation, right? इसको रिप्रेजेंट करने का मतलब इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का बेसिक लाइक स्टैंडर्ड या इजी फॉर्मेट है डिटर्मिनेंट की तरह लिख देना, ठीक है? तो जैसे कि हमने मैट्रिसेस में देखा था, डिटर्मिनेंट्स बेसिकली आर स्क्वायर मैट्रिसेस, राइट? यू कैन नॉट लाइक हैव अ डिटर्मिनेंट ऑफ an order comma 3, that is not, it cannot have determinant, right? So it has to be a square in the form of a square, और उसका ऑर्डर वही होता है, जैसे अगर 3 by 3 का डिटर्मिनेंट है तो ऑर्डर 3 होगा, ठीक है? तो देखते हैं क्या है, क्या कहना चाहते हैं. सो मैथमेटिशियंस डिफाइन द सिंबल दिस एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 and the four numbers arranged in the row and column were called its element. Its value was taken as a1 b2 minus a2 b1, which is the same as the denominator. Okay. If we write the coefficients of the equation in the following form, such an arrangement is called the determinant. Okay. In a determinant, horizontal lines are known as rows, vertical lines are called as columns. मतलब horizontal lines जो होती है वो rows कहलाएंगी, vertical lines जो होती है वो कहलाएंगी हमारी columns. ये बहुत बेसिक सा था, I hope it covers up. Okay. Yes. So अगर two rows और two columns का determinant है तो order 2 हो जाएगा. अगर 3 rows का है तो क्या हो जाएगा? Order 3. Now moving on, let's see हमारे पास क्या कहते हैं. So evaluation of determinant using the Sorus diagram. Okay. So what does the Sorus diagram say? Okay. इसको हम यहाँ solve करते हैं. I'll write it in a better writing for you guys. But actually I'm not good with writing over the board. So just bear with my handwriting right now. तो अगर ऐसे अगर लिखते हैं अपन A11, A12, A13, B11, B21, B22, B23, C31, C32, C33. तो व्हाट डू वी डू, इसको एज इट इज लिख लेने देते हैं और वापस से क्या रिपीट करते हैं, टू रोज वापस रिपीट करते हैं, राइट? सो आई जस्ट मेक द बोर्ड बिगर फॉर मी एंड देन वी राइट टू रोज अगेन. Okay, it does not matter if I'm writing B. They have taken this only, but I've taken this. Guys, I've made a mistake. This should be one. One. So I'll erase and write it for you again. So it is B11, 21. Sorry, A11, B A21, B21, and C. Guys, what the? Sorry, just a minute. Okay. So if we take it like B12, B22, and C32, right? So this is what we have, and now what we do is we do a cross multiplications. So how do we solve it? We multiply these three and we multiplied these three, right? And then again, what we do, we multiply these three and then we multiply these three and add them up and subtract it from these three and we get our answer. It's as simple as that. Nothing out of the box.
Very easy to solve. So we apply, we can just see on the station and go by it. So let's go. I'll solve it by myself. Let's just not use a solution for the time being, right? I'll just scratch it over and we see this. Oh, I just messed it up a bit. So okay, I'll just hide the solution for you guys and we, right? And do it by ourselves. So let's see. So we have 3, 9, 2, 2 again, minus 1, 3, 5, 4, minus sorry, 3, 9, 2, 2, minus 1, 3. So we were going in this direction, right? So we have to multiply this. So we get a 15. Now I'll just tell you different paths. So we have done this. Now to do this. Now to do this. So let's it right now. 15. Now what do we have? 2, 4, and 2 again. So it is 16. And now again, what we have? 27 into 5 would give me 135. Right now I have to subtract it from, do we have another kind of shape? Let's use this one. Now we have to subtract it from this, this, and this. So let's go. What do we have here? We have a negative sign, so we'll have to minus this. So we have 5 and we have a 2 here. So minus 10, minus 90. Okay, we'll write with this pen now. And we have 4. So 9 and 4 is 36 plus 36 plus. So this is minus of 10. So minus 100 plus 36 is minus 64. And there is a negative sign that broken plus. So we are left with 15 plus 16 plus 135 plus 64. This gives me this, and this gives me 80, and this gives me 150. So 150 plus is 230. So I can see the answer here itself. It's 230. So we were right. You get it how to do it? It's very easy and nothing out of the box. So I hope it clears things up for you. Now let's move to another part of the question or the theory rather. तो सबको समझ आ गया होगा ना, यही सब क्या करना है, दो रोज को रिपीट करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, अपना आंसर निकालना है, बहुत इजी है। आप इससे 3 से बार प्रैक्टिस करोगे, यू गेट अ हैंग ऑफ इट। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट। वेरी वेरी इजी डिटरमिनेंट का इवैल्यूएट करना। स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ से x प्लस वन कॉमन ले लेते हैं जस्ट टू मेक थिंग्स अ बिट इजियर फॉर अस। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन minus x plus 1. So this won't cancel, this would remain. Guys, nothing would cancel. So what are we left with? X plus 1 into x square minus 2x plus 2. We are remained with this. Okay. So now let's solve it up. X cube and we'll get an equation. So why just multiply? You know how to solve this, right? Very easy. Now moving on to the next. So many strokes we have today. Okay. So now cofactor and minor of an element. Okay. So minor of an element is defined by the determinant obtained by deleting the row and column in which the element lies. मतलब जैसे कि अगर हमें माइनर ऑफ A2 निकालना है तो हम कैसे करेंगे? हम एक काम करेंगे, ये रो को हाइड कर देंगे और डिटर्मिनेंट निकालेंगे बचे हुए चीजों का। तो बच्चे का क्या है अपने पास? ये है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A21, A23, A31 और A33। ये हो गया हमारा माइनर। और अब हमें को फैक्टर निकालना है तो हमें माइनर के ऊपर क्या करना पड़ेगा? -1 टू द पावर i प्लस जे और ऐड करना पड़ेगा ऐसे। बहुत कम अंतर होता है माइनर और को फैक्टर में, सिर्फ एक एक एडिशन हो जाता है उसमें। इस चीज का -1 टू द पावर i प्लस जे। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड इट। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे कि अ डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3 विल हैव 9 माइनर। ऑफ कोर्स हर एक एलिमेंट का अपना माइनर होगा, तो 9 माइनर्स होंगे, 9 एलिमेंट्स है। और each minor will be a determinant of order 2
डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4 विल हैव 16 माइनस ऑफ कोर्स क्योंकि 16 एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर। और ईच माइनस का डिटर्मिनेंट कितना होगा ऑर्डर का? 3 ऑर्डर का। ओके, दिस इज अंडरस्टैंडेबल ना? हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी आपको कैन हेल्प यू अ लॉट दिस, दैट अगर आप कोफैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंट रो एंड कॉलम एलिमेंट्स विल रिजल्ट इन अ जीरो वैल्यू। काफी बार आपको दिखता है कि कोफैक्टर्स लिख देंगे, नंबर्स लिख देंगे, तो आपको देखना पड़ेगा क्या ये तो रो के एलिमेंट्स ही है। कई बार ऐसा होता है कि रो के एलिमेंट्स या कॉलम के एलिमेंट्स से निकलते हो, तो आप डायरेक्ट हम लिख दोगे वो जीरो, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, रो एंड कॉलम ऑपरेशंस तो बहुत आसान होते हैं रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। सो ऐसा होता है कि अगर हम किसी रो को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, अगर हमने वन और टू को चेंज कर दिया, तो वो इंटरचेंज करना कर सकते हैं पर, ठीक है, इंटरचेंज इज अलाउड। बट अगर आपको, इसका मतलब क्या है, ये मतलब दिखा रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है दिस लर्निंग की व्हाट डू वी बाय दिस लाइक साइन। तो अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है आर ऑफ आई इंटरचेंज विद आर ऑफ जे, इसका मतलब ये है कि हमें दो रोज को इंटरचेंज करना है, आई को जे से और जे को आई से। यहाँ पे आई और जे सेम, मतलब दो सेम रोज को कैसे इंटरचेंज करोगे, डज नॉट मेक सेंस, राइट? सो मूविंग ऑन, एक नोटेशन तो समझ आ गया। फिर सी आई इंटरचेंज विद सी जे लिखा हो, तो इसका मतलब होगा कि वो हम कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट वी हैव, अगर हमें रो और कॉलम को इंटरचेंज करना तो वो भी कर सकता है। उसके बाद अगर हमने लिखा है आर ऑफ आई इज इक्वल टू आर ऑफ के ऑफ आई, मतलब हमने एक रो को के से मल्टीप्लाई किया है, के कांस्टेंट हो सकता है कोई सा भी, ठीक है। तो अगर हमने के ये लिखा है तो इसका मतलब हमने के से मल्टीप्लाई किया है पूरे एलिमेंट्स को रो के। ओके, नाउ मूविंग ऑन, सारे सिंपल नोटेशंस है, आई थिंक अगर आपने थोड़ा बहुत भी मेथड्स किया होगा तो बहुत आसान होगा। अब हम बोला है को फैक्टर ऑफ A12, सो A12 इज दिस, राइट? तो हमें को फैक्टर निकालना है इसका, तो ये हो जाएगा 641 - 7 का डिटर्मिनेंट, यानी कि -32 -4 -46। एंड सिंस -1 की पावर 3 हो जाएगी तो ये ऑड है, तो माइनस माइनस हो गया कैंसिल एंड वी गेट अ पॉजिटिव ऑफ 46, राइट? वेरी सिंपल। Now write the minus and cofactors of the elements of the following determinants. Very easy. अगर 2/2 का फैक्टर है तो क्या ही निकालोगे, इट्स वेरी इजी। अगर ऐसा है तो देखो, अगर 2 का हमें माइनस निकालना है तो 3 हो जाएगा। वैसे अगर 4 का निकालना है 0 हो जाएगा, -4 का निकालना है, सॉरी 0 का निकालना है तो -4, 3 का निकालना है तो 2। माइनस की बात कर रहे हैं। एंड कोफैक्टर्स में क्या कर दोगे, -1 टू द पावर जो उनसे पे नंबर पे पोजिशन है वो। इट्स जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कैसे करते हैं सॉल्व, इसलिए दिया गया। Find the this is also very easy guys, I'm not going through this, very simple। ना प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकते हैं थोड़ी, प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट while solving determinants because ज्यादा इज द थिंग इज कि जो भी हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं ना, वो ज्यादा प्रॉपर्टीज के खेल होते हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है तो बस आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करने ही सॉल्व करना है, दैट्स इट। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई गिव यू अ मिनट टू रीड थ्रू दिस, एंड जब आप एक बार रीड थ्रू कर लोगे हम वापस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो जस्ट अभी टाइम हो रहा है, सो वी जस्ट टेक मिनट्स, आई गिव यू अ मिनट्स टाइम टू रीड थ्रू इट।
Did you guys read it? I'll just read it for you guys also once again and we'll just go through each property. तो first property कहती है reflection property. मतलब determinants remains unaltered if the rows are changed into columns and columns are changed into rows. Very cool. Now all zero property. If all elements of a rows are zero, then determinant zero. और column of course ही बात है अगर तुम कोई से भी column या row को ले लोगे तो सारे elements के zero कर दोगे कैसे भी करके तो determinant zero हो जाता है वो. It's a very valid property. Now, proportionality repetition property. The of all the elements of a row are proportional or identical to the elements of some other row or column, then the determinant zero. क्यों zero जाएगा? Because we know that subtraction of elements of one element to another element is possible, right? It does not change the determinant. जैसे कि अगर दे रखा है A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z. तो हमें पता है ये इक्वल होगा A minus P, B minus Q, C minus this would be R, so P, Q, R, X, Y, Z. तो ये डिविजन सब्ट्रैक्शन अलाउड होता है राइट. तो अगर ये सब्ट्रैक्शन अलाउड है और प्रोपोर्शनल है तो आप प्रोपोर्शनल का के बाहर कर दोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एक जीरो रो बन जाएगी और अगर जीरो रो बन गई तो डिटर्मिनेंट आपका जीरो हो जाएगा. सो दिस proportionality property is a like a derivation of the B part, right? Switching property. Interchange any two rows of the determinant changes its signs. Of course, अगर तुमने दो rows को interchange कर दिया R of J interchange with R of I तो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या जाएगी माइनस ए. अगर वो पहले ए था तो अब क्या हो जाएगा माइनस ए. आप डी लेंगे उस केस में तो अगर वो पहले डी था तो माइनस डी हो जाएगा. स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी मतलब इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो of a determinant are multiplied by a non-zero constant, then the सिर्फ एक रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो डिटर्मिनेंट्स गेट मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट. यानी कि अगर मैंने यहाँ पे कर दिया ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड और मैंने यहाँ पे कर दिया उसको मल्टीप्लाई कैसे तो के ऑफ ए के ऑफ बी और के ऑफ सी और सेम एग्जैक्ट होते हैं. अगर इसकी वैल्यू डी थी तो इसकी वैल्यू जाएगी के डी. दैट्स इट. सम प्रॉपर्टी तो पता है आपको कि अगर हमें दो डिटर्मिनेंट को सम करना है तो दो पर्टिकुलर रोज में सम होना चाहिए और बाकी सारा डिटर्मिनेंट सेम होना चाहिए. जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इलस्ट्रेशन में. आई विल erase this part. Now getting back, properties of variance. ये वेरिएंस जो मैंने आपको बताया कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो विद इन रोज विद इन कॉलम्स विद एनी फैक्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. उसको हम बहुत एक्सटेंसिवली यूज करेंगे सॉल्व करने में क्वेश्चंस. इसको तो आप ध्यान रखना ही पड़ेगा. इट्स वेरी एक्सटेंसिवली यूज. ठीक है. फिर फैक्टर प्रॉपर्टी. इफ अ डिटर्मिनेंट like the determinant symbol becomes zero when we put x is equals to alpha, then x minus alpha is a factor. Very basic guys. This is something that we did in quadratic equation as well. ये सब में applicable होता है factor वाला part. तो nothing out of the box. उसके बाद अपने आता है triangle property. That if all the elements of the determinant above and below the main diagonal consist of zeros, then the determinant is equal to the product of the diagonal elements. That is this. बहुत से इट्स अ डायरेक्ट एप्लीकेशन कि आप अगर देखो तो अगर मैं डिटरमिनेंट इस रो के हिसाब से लूं इस रो के अकॉर्डिंग लूं तो व्हाट विल गेट इज this into this minus this. So I'll get a multiplication of diagonal elements only, right? तो वही है. अगर ट्राइंगल अपने पास कोई है ट्राइंगल मैट्रिक्स और उसका डिटरमिनेंट लेना है अपन को तो क्या होगा वो product of diagonal elements. Now determinant of a cofactor matrix is basically determinants whole square. Very simple. I won't give you a derivation of this. You can derive it by yourself because it will be a lengthy derivation. It's the same. Now moving on to a illustration. Let's see what the illustration says. एक बार concept भी दिखना है कि concept भी आप चाहो तो एक बार read through कर सकते हो इसमें. By interchanging two rows or columns, the value of the determinants differ by a negative sign. जो अपन ने पढ़ा था पहले. If alpha dash is the determinant formed by replacing the elements of determinant else by the corresponding cofactors, and if determinant is zero, then determinant of one is zero. As okay, I didn't get this what they're trying to say, but let's move on because I don't think we'll just go through this much of detail in each of the concept. But we'll just skim through the concept for right now because this is for like if you want to revise, then we'll go through it, right? So अगर हम देखते हैं next question तो हमारा question है using properties of determinants prove that the determinant of ABC, BCA, CAB is equal to this. Okay.
तो इसके अंदर आप सबसे फर्स्ट इंट्यूशन क्या आता है, दैट आपको ये फैक्टर बाहर निकालना है, दिस फैक्टर हैज टू बी कम आउट, राइट। तो हम क्या करेंगे, वेरिएंस प्रॉपर्टी लगाएंगे और फर्स्ट कॉलम के अंदर बाकी दो कॉलम्स ऐड कर देंगे, जो कि सोल्यूशन में भी किया गया है, राइट। देन हमारे पास ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का एक फैक्टर कॉमन बाहर निकल जाएगा, जो हम ब्रैकेट के बाहर कर देंगे, राइट। तो हमारे पास ये निकल जाता है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज we can subtract the second we can subtract the first row from the second row and from the third row as well. तो उससे क्या होगा, हमारे दोनों ये जो होते हैं फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो एंड द थर्ड रो बिकम जीरो, जो यहाँ पे एग्जैक्टली किया है सोल्यूशन में। और फिर डायरेक्ट अगर हम मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट निकाल देंगे, क्योंकि अब डिटरमिनेंट इज वेरी इजी, बिकॉज अगर दो एलिमेंट्स आपके जीरो हो गए, देन टेकिंग आउट द डिटरमिनेंट इज वेरी इजी। सो वी टेक आउट डिटरमिनेंट एंड गेट द वैल्यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दे रखा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। ओके, सो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लेते हैं सब जगह से। अगर मैंने अल्फा बीटा गामा कॉमन लिया तो मैं सोचता है अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे नेगेटिव साइन बचेगा, यहाँ बचेगा दिस और गामा, तो यहाँ बचेगा अल्फा बीटा और माइनस ऑफ गामा, ठीक है। ये बच रहा है। अब मैं वापस से अल्फा बीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे बचता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन, ठीक है। ये सब बच रहा है अभी। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो एक काम करता हूँ मैं, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लेने की कोशिश कर सकते हैं, तो और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। या बट वन वन सा डिटर्मिनेंट वुड आल्सो बी वेरी इजी, सो लेट्स गो विद डिटर्मिनेंट ओनली। माइनस वन, सो वन माइनस वन, सो दिस वुड गो जीरो। उसके बाद माइनस वन, देन वी हैव माइनस वन, देन वी हैव वन वन plus of 1. So this gives me 2, this gives me 2, we get 4. Direct derivation and nothing out of the box. Simple. इसका भी डिटरमिनेंट निकालना इज नॉट इजी, टफ गाइस, तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो rather than just simplifying it furthermore, ठीक है। Now let's move on to the next question. What do we have here? Just give me some time to erase this. Okay. तुम्हारा नेक्स्ट है eighth illustration. Show that alpha, beta, gamma, theta, phi, it's chi, right? Phi chi, and then delta, mu, and v. ये दे रखा है, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ऐसे कर सकते हैं इनको ऐसे। So basically what they have done is they have changed a lot of things first of all. So let's do it. सबसे पहले तो हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बचता है अल्फा बीटा गामा, हमारे पास आता है थीटा फाई, ये और क्या आएगा उसके बाद डेल्टा यू एन वी। दोनों सेम है अभी। अब नाउ इन दोनों को शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, बीटा अल्फा गामा फाई थीटा फाई, now delta mu v. No, sorry, I'll just erase it once again. So what I'm left with, uh mu and then delta, and then we switch these two rows, so we'll get our answer. Simple. First we took a transpose, then we change, with transpose लेने पर determinant change नहीं होगा, right? Transpose ले लिया अपन ने, फिर एक बार चेंज करने पर साइन चेंज होगा, फिर रो चेंज करने पर फिर अपन ने एक बार कॉलम चेंज किए तो एक बार साइन चेंज होगा, तो बिकम्स पॉजिटिव, तो इक्वालिटी एग्जिस्ट। नाउ गेटिंग बैक टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब समझ आया ना, पहले ट्रांसपोर्ट लिया, फिर एक बार हमने रोज चेंज किए, फिर एक बार कॉलम चेंज कर दिया, सो वी गॉट आवर आंसर। एक बार रो चेंज करने पर नेगेटिव साइन, एक बार कॉलम चेंज करने पर नेगेटिव साइन, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी सी आर ऑल डिफरेंट इफ देन प्रूफ ए बी सी इज इक्वल्स टू माइनस वन। ओके, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइक आई जस्ट स्किप, आई डोंट वांट टू सी द सॉल्यूशन, सो इट इरिटेट्स मी, राइट। I hope this goes with you also. कि बस solution लिख जाता है, then there's no fun of solving the question, right? You're not using your brain, so I'll suggest that for you guys as well. कभी solve करने बैठो ना, तो कभी solved paper लेके मत बैठना। Always take questions जब आपके पास like simple questions हो, आपको आंसर नहीं पता हो, so that is when you get to use your brain and get to learn. अब देखो, इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसा करते हैं इसको, ठीक है। अब सर बोलोगे वन तो कहाँ ही चलेगा, सो वन विल बी इन द पार्ट ऑफ अनदर पेपर, मैं बस आ जाएगा
ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, राइट, दिस इज राइट। अब देखो, अभी यहाँ से अपने पास कॉमन क्या होगा, ए निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, सी निकल जाएगा। सो इट इज ए बी सी इंटू 1 + 1 ए स्क्वायर 1 b b स्क्वायर 1 c c स्क्वायर। और अब इसको मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ, देखो एक बार मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, तो यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और फिर इन दोनों को वापस इंटरचेंज कर दूंगा तो इसके सेम बन जाएगा ये। तो दो नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव। भाई दो नेगेटिव, बाय व्हाट डू मैं दो नेगेटिव से मतलब क्या मीनिंग है मेरा, कि हमने दो इंटरचेंज करे ना कॉलम्स के, तो हमारे पास दो नेगेटिव साइंस की पावर आएगी। तो -1 to the power 2 वुड गिव मी 1, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ए बी सी प्लस 1 और 1 1 1 ए ए सॉरी ए बी सी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सो हमें पता है कि ये जो है ये जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, बिकॉज दिस इज द आइडेंटिटी। अगर इसको हम जीरो करेंगे, इसका जो आता है रिजल्ट मैं बताऊँ, आप फर्स्ट थिंग, इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है a - b b - c एंड c - a। सोल्यूशन में दे रखा है ऐसा, यस सोल्यूशन में दे रखा है ऐसा, दिस इज द डोमेन व्हाट वी गेट, एंड हमारे पास बचा है यहाँ पे a प्लस दिस। तो दिस वोंट बी जीरो, राइट, दिस वोंट, अगर ये जीरो हो गया मतलब दो एलिमेंट सेम हो गए, जो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी नहीं है, दो नहीं सेम हो सकते। तो अगर ये जीरो नहीं है तो इनको जीरो होना पड़ेगा, और ये जीरो होंगे मतलब ए बी सी इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। I'll just try to hide it again. I just don't want to see the question. Okay. So the next we have is the a plus b plus 2c is equals to this. Okay. ओके, तो हम क्या करते हैं ना, कॉलम्स ऐड करते हैं। अब आप मुझे जो कॉलम्स ऐड करने का क्यों समझ पड़ रहा है, टेल यू व्हाई। क्योंकि अगर मैं तीनों कॉलम्स को ऐड करता हूँ ना, तो हम गेटिंग अ सेम नंबर। तो एक काम करते हैं, कॉलम्स को ऐड कर देते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास क्या बचता है, 2a प्लस 2b प्लस 2c ए बी। देन हमारे पास यहाँ पे आएगा 2c प्लस 2b प्लस 2a अगेन बी सी प्लस 2a बी। और ना यहाँ पे 2c प्लस 2a प्लस 2b ए सी ए बी। अब मैं बाहर निकाल दूंगा तो मेरे पास बचेगा, I won't write 2 again and again now. I'll write 2 into A plus B plus C into a determinant of 1 1 1 A B plus C plus 2A A and B B C plus A plus 2B. Simple. Now I have to again remove a factor of I have to take out a factor of A plus B plus C, right? So हम इसको कैसे कर सकते हैं? Let's do one thing. जीरो बना लेते हैं ना, एक काम करते हैं, जीरो बनाते हैं। मैं सेकंड रो में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, थर्ड रो में से भी फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास बचेगा, लेट्स सी क्या बचता है। और बचेगा ये, और उसका बचेगा जीरो, उसका बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे बचेगा जीरो, यहाँ पे बचेगा जीरो, यहाँ पे बचेगा जीरो, और यहाँ पे बचेगा, मैं फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो बी प्लस सी प्लस ए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया डायरेक्ट आंसर, वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल जस्ट हाइड नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो, आई एम नॉट सीइंग द सॉल्यूशन, आई एम प्रिपेयरिंग। अरे यार, राइट, नाउ वी हैव ट्राइड टू हाइड इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, दिस इज अगर थोड़ा बहुत हेल्प लगता है तो टेक, बट अदरवाइज आई एम नॉट कंसीडरिंग सॉल्यूशन हियर, आई एम डूइंग इट बाय माय सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू एटलीस्ट। So we have the 11th solution, 11th question here. What does it say? A square plus 1 AB AC AB B square plus 1 BC AC BC C square plus 1. Okay. So what am I seeing here?
Let's see the solution, guys. I'm not getting a click out of this. See, one thing that I'm seeing is there is a common factor of A or B or C on in each row and each column that is so evidently visible. But how do we solve this? Let's just go with the solution once and see what they're trying to do. And so what they're doing is they're using scalar multiple and variance property, of course, which we have been using in the past questions as well. So इसमें क्या क्या है? Okay, okay, cool. Nice. So see, this is also very interesting way of solving question. I have solved questions earlier, like in my J days, but I didn't remember the like it didn't click me. So what I'm trying to do is I'm multiplying and dividing by ABC. So I'll multiply an A here and a B here, right? That's what I'm doing, right? And a B here and a C here. And then what I'm trying to do is if I multiply the A here, B here, and C here, then I take a common from this, B common from this, and C common from this. So what am I left with? Let's see. I am left with this. So this is very easily solvable for you guys, right? This is very interesting, guys. I can't like see if you don't get it by yourself. I know कि आप सोचते हो कि click नहीं होता. So like after seeing the question, so that is very common. Sometimes you don't get the solution right with the like the concept. Maths is something like that. Only अगर click हो गया आपको question की solution उस direction में जा सकता है, then it's very easy. But it's not clicking to you, then it's more about practice. The more you practice, the more question you're like able to click it कि हाँ इस direction में जाता है. So from this question, what we learn is that multiplication and division is also something that you can do in a matrix rather than just playing with rows and columns. यहाँ पे हमने एबीसी को मल्टीप्लाई किया और एबीसी के फैक्टर्स वापस बाहर निकाल दिया, तो हमें क्या मिल गया? एबीसी एबीसी कैंसिल आउट हो गया, सो वी गेट अ न्यू कंप्लीटली न्यू मैट्रिक्स और उसको सॉल्व करना काफी आसान था. ठीक है. सो नाउ मूविंग ऑन विद सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स, जो कि हमने उसमें भी किए थे मैट्रिसेस में, अगर आपको याद हो. So symmetric determinant is called symmetric when A of ij is equals to A of ji. Right? Very similar to the matrix form. Skew symmetric का भी same है. A of ij is equals to minus of ji. Okay, so determinant of A is zero मतलब A singular है. Determinant of A non-zero है मतलब वो non-singular है. As simple as that. ये अपन ने मैट्रिक्स जब पढ़ा था तब भी डेफिनेशन देखी थी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता, सॉरी सिंगुलर कब होता है और कब नहीं होता है. Okay. So now moving on, multiplication of two determinants. This is something that is very important और इसके मतलब multiple तरीके करने के. But the thing is, इसको आप ऐसे करते हैं. Like there is a basic formula. I'll tell you how. अगर इसको नहीं पता हो, तो अभी सबको पता होना चाहिए 10th क्लास में क्या होगा. But नहीं, अगर नहीं क्या हो तो you take the first row of element of this, multiply it with this. Then you take this and multiply it with this. No, you don't do this, right? You multiply it with this, right? You're done. Now moving to the next part, you multiply this with this, and then this with this, and you add them up. Now we move to this to this, and this to this to this. Yeah, मतलब how do I explain it? First row को तुम first column से multiply करोगे, or the first row of the first like part of the first. I'll see. This is determinant number one and determinant number two. So row one of D1 multiplied by column one of D2. Then same row 1 multiplied by column 2, then row 2 multiplied by column 1, then row 2 multiplied by column 2. As simple as that. और कैसे multiplication हो रहा है? Element का multiplication होके addition हो रहा है. So you get right what kind of multiplication I'm talking about. Same goes with the 3 by 3 factor में भी same चीज होती है. ठीक है.
नाउ मूविंग ऑन, अब बाकी का देखते हैं। टू डिटर्मिनेंट्स अगर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट। अगर सेम ऑर्डर के नहीं हुए तो उनको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। To get TMN, the term m in the mth row and column in the product, take mth row of the first determinant and the nth column of the second and then add. Simple. Very similar. It's like, of course, I'll just highlight it for you guys. So you can bhul jao kabhi to. But this is very like a standard and easy to understand way of explaining what does the element look like. उसके बाद this method is the row by column multiplication rule of the product of two. The n dash is a determinant formed by replacing the elements. Okay. This is also you can remember, guys. I'll not get into the depth of it because this is also important though. ठीक है? So next चलते हैं, reduce the power of the determinant to 1. Very easy, multiply करना है simply. उसके बाद show that is equal to this. तो इसको हम कैसे करेंगे? हम इसको multiply करके देख सकते हैं, simple. Multiply कर लीजिए and you get the answer. Why have to like solve it up this much? Multiply करने पे नहीं आएगा क्या? आ जाएगा ना? Okay, let's move to the another part. Some standard determinants. This is very important, guys. I'll like color this up for you guys to a very large extent. इसको please कर लेना. Sorry, I'm coloring the wrong part now. My bad. Okay, I'll color it nicely for you guys because this is really important. Now, what am I typing? अच्छा, oh, the laptop, the keyboard is not actually activating. Is it activated now? No, it's not. I don't know the computer, but इसका ऐसा है कि this is very important. These formula. Please note it down और उसको तो बिल्कुल याद कर लेना because these can really help you out while solving. अभी भी आपने देखा था हमारे पास आ गया था ये वाला, right? This question we solved that a and a square. So I directly wrote a minus b minus c minus a because I knew कि ये property होती है since my JEE days. There was no doubt about it that I had to think through. So please ऐसे ही होना चाहिए that and with time you'll get it also, but this is something that you have to remember. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एक्सरसाइज में भी, तो उसको सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ जाएंगे, याद हो जाएगी अपने आप ही. वो जस्ट ओके, सो वी आर डन. एक बार रीड आउट करना है कि आपके लिए प्रॉपर्टीज. इफ यू वांट आई कैन रीड इट आउट फॉर यू गाइस. Okay, some of you guys are saying to read it out. So अगर देखा है, if we have a determinant of a 1 1 1 a b c a square b square c square, then it is as simple as a minus b minus c and c minus a. अब यहाँ पे वो कि implied property लगती है कि अगर देखो a and b इक्वल होगा तो डिटर्मिनेंट एनीवे जीरो जाएगा ना. तो आप उससे भी थोड़ा सा एनालॉजी बना के कर सकते हो. ठीक है. The next we have is ABC B A square B square C square BC CA AB, and that is equal to 1 2 3 A square B square C square A cube B cube C cube. Very simple. I can also prove this very easily to you guys, but let's not go there. तो इसके अंदर एक फैक्टर और मल्टीप्लाइड हो जाता है. कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाइड हो जाता है? AB plus BC plus CA. Now another we have is ABC BC CA AB ABC ABC ABC, and then we have ABC ABC A square B square C square A cube B cube C cube. So there we have another factor that is multiplied as ABC. Okay, so now let's just do an example. So let's see what the example is saying. Evaluate the determinant root p root q to root r this. Okay. So first things first, we'll take out the root r common. तो दोनों में से रूट आर कॉमन निकाल देंगे तो एक आर बच जाएगा और उसके बाद हमें ये मैट्रिक्स बचेगा. ओके, नाउ व्हाट आर वी अप्लाइंग? वी आर अप्लाइंग C1 में से सब्ट्रैक्ट करना है रूट क्यू टाइम्स ऑफ CQ माइनस रूट P टाइम्स ऑफ C3. ठीक है. ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या बचता है?
अच्छा कॉलम में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस, रियली कॉलम में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो लेट्स सी। कॉलम में ये सब ट्रैक करने के बाद बच रहा है, सो इट्स वेरी इजी राइट, नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, वेरी सिंपल application of variance and taking out factors out from the determinant, very simple. Now moving on, अगर हमारे पास abc पॉजिटिव है और नॉट इक्वल है, then show the value of the determinant abc bca and cab is negative. Okay, I'll tell you why, how we can do this. आपको पता है इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, राइट? दिस इसका हमने पढ़ा ना अभी। अच्छा इसका नहीं पढ़ा अपन ने। तो इसका जो एक्सपेंशन होता है, वो एक्सपेंशन क्या बन के आता है, ये बन के आता है, दिस। तो लेट्स राइट इट अप, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, ए प्लस, आई एम नॉट राइटिंग दिस, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी बी सी सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट? एंड इसको आप कैसे लिख सकते हो, माइनस टाइम द half of a plus b plus c into sum of difference of the squares. Without like, if you read the derivation, it's not that tough. Just read it through by yourself. It's very nice property. तो ये आपको आसानी से हो जाएगा। I'll give you a minute to read, तो एक बार इसका derivation read कर लीजिए, because it's very interesting and like it can help you solve for the derivations also. It's not basically a derivation, it's a question only. ऐसा नहीं है आपको याद करके रखना ही है, बट आपको पता लग जाएगा कि अगर आपका ए बी सी बी सी और सी ए बी का एक वो दे रखा है numbers, और सारे नंबर्स अनइक्वल है, तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। या बहुत आसानी से चेक भी कर सकते हैं, राइट? तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प हो जाएगा। तो आई गिव यू सम टाइम टू रीड इट थ्रू एंड देन वील मूव ऑन। लेट्स जस्ट वेट फॉर अ मिनट। Okay, so you must have read it through. Let's move on to the next part. Next question, what do we have? This question I remember. This is a question I remember that I did for my JEE days as well. So let's see. हमें डिटरमिनेंट दे रखा है cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस दिस, सो ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स रीड द सॉल्यूशन, आई जस्ट गिव यू एन एडवाइस कि इसको कैसे करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बीटा माइनस गामा को ले लेते हैं अपन ए, गामा माइनस अल्फा को ले लेते हैं बीटा, और अल्फा माइनस बीटा को ले लेते हैं सी। सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट liking the choice of variables that they're taken. I would have taken alpha minus beta as A, beta minus gamma as B, and gamma minus alpha as C, because that makes more sense, right? But okay, let's just go with the flow. And what do we get here is 1 cos square A, cos square C, cos square B, cos square C, 1 cos square A, cos square B, cos square A, 1, right? और हमें ये भी पता है कि ABC का सम कहता है 0 है, ठीक है।
हम आगे चलते हैं। हमें क्या दे रखा है, हमने बोला है नेक्स्ट करने के लिए कि जो कॉलम 2 है उसमें से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉलम 2 में से, तो हमें क्या मिलता है? cos square c minus 1 1 minus cos square c and cos square a minus cos square c. We are good with this, we got it. Now column 1 में क्या करते हैं, column 3 subtract column 3 minus, so we are multiplying it with the factor of minus 1 and then adding this. तो नेगेटिव साइन आना चाहिए वैसे तो, but ठीक, I don't know what they're doing here. They have written it wrong. It should be 3 here. See, I'm taking my mistakes now. It should be 3 here. Okay. So again, cos square b minus 1, then cos square a minus cos square c, and then 1 minus cos square b. तो ये बन जाता है हमारा पूरा। उसके बाद क्या किया है, they have written it the same way, right? No, they have like changed, they have written cos square a minus cos square c को कैसे लिखा है, sin b into sin of c minus a. Again, this is very trigonometry oriented. अगर abc का सम 0 हो तो आप cos square a minus cos square c को sin b into sin of c minus a कैसे लिख रहे हो? b को आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, माइनस ऑफ साइन ए, माइनस ए माइनस सी। तो क्या बन जाएगा, वहां पे नेगेटिव साइन आ रहा होगा, तो नेगेटिव साइन दे हैव टेकन इन एंड गॉटन द वैल्यू ऑफ बी। सिमिलरली विद cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी को कैसे कर दिया, sin c into sin of b minus a. Very simple, like it's a bit technical, guys. I'll tell you. This is what I liked about mathematics for JEE. Sometimes it can like really take you in, and you have to solve the question thoroughly, and you just have to like keep on solving and go with your cut. तो मतलब इसको सॉल्व करते जाओ एंड यू विल गेट योर आंसर। तो अब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पास क्या बनता है यहाँ पे, दिस इज द वी गेट राइट व्हाट वी डिड ना। उसके बाद क्या किया है, -1 सारे बाहर निकाल लिया उन्होंने। ठीक है, -1 बाहर निकाल लिया। ओके, देन सी आई टोल्ड यू ना व्हाट दे डिड हियर, दिस इज वेरी नाइस। I can give you a minute to read through because I am also what trying to do is trying to understand what they're doing in the solution. मैं भी खुद देख रहा हूँ उनने क्या क्या solution में, because you cannot just be like कि solutions को try करते हैं, right? You have to like read it through and solve it by yourself once after seeing it. This is again trigonometry oriented. Let's move to the other part because हमें थोड़ा theory भी cover करना है. So let's see. Next is system of equations. Yes, it is very important, guys. System of equations. कई बार इस पे भी questions आते हैं और determinants can really make it easy for you to solve system of equations. तो हमारे पास अगर एक टू वेरिएबल की इक्वेशन है तो हम उसको बहुत सारे तरीके से जज कर सकते हैं, या फिर उसके उन वेरिएबल्स जो उनके क्या बोलते हैं, ए बी को जो भी बोलते हैं, लाइक आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड फॉर इट, द फ्रंट वेरिएबल्स और वॉट एवर दे आर कॉल्ड, उनके नंबर उनकी वैल्यूज को जज करके बहुत कुछ बता सकते हैं इक्वेशंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर दो पैरामीटर्स में डिवाइड करते हैं अपन। एक तो कंसिस्टेंट हो सकती है दो इक्वेशंस, या तो इनकंसिस्टेंट हो सकती है। इनकंसिस्टेंट बेसिकली आप देखो एक्स एंड वाई के अंदर अगर टू वेरिएबल्स की अगर तुम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बेसिकली अगर इसको you see in a graph तो आपको क्या देखने को मिलता है, that this is basically a representation of two lines, right? और two lines कभी intersect कर सकती हैं या parallel हो सकती हैं। There are two cases that can happen with two lines, nothing other than that. ठीक है, और या तो वो दोनों लाइन सेम हो सकती है, that's it. तो अगर जैसे कि हम बात करें इनकंसिस्टेंट की, तो इनकंसिस्टेंट मतलब इनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सोल्यूशन नहीं मतलब वो किसी पॉइंट पे मिल ही नहीं रही है, मतलब वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और कंसिस्टेंट की अब दो चीजें हो सकती है। कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन तो है, तो या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, यानी कि वो एक दूसरे को टच कर रही है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही है पूरे टाइम पे, या तो वो एक पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि जो आपके वेरिएबल्स है उनके कोएफिशिएंट्स देखा, दे आर कॉल्ड कोएफिशिएंट्स। ओके, सो कोएफिशिएंट्स का रेशियो जब इक्वल ना हो या उनका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, तब वो इंटरसेक्टिंग होगी। और इनफाइनाइट कब होंगे, जब सारे कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट टर्म को मिला के उनका रेशियो सेम हो।
और इनकंसिस्टेंट कब होंगी जब कोएफिशिएंट्स का रेशियो तो सेम है बट कांस्टेंट टर्म सेम नहीं है, राइट? तो देखियो, दिस इज व्हाट वी गेट टू नो नाउ। नेक्स्ट, ओके ओके, सो गेटिंग बैक, हमें दे रखा है कि solution to the system of equation is given by this. Okay, तो solutions भी हमें पता लगा सकते हैं हम determinants के थ्रू। वो क्या होता है, del 1 by del and y would be equal to del 2 by del। ठीक है, we get what del 1 and del 2 is। del 1 is basically जब आपने 1 को हटा दिया हो, मतलब फर्स्ट वाले टर्म को हटा दिया हो, then del 2 is जब आपने b वाले टर्म को हटा दिया हो, and del is the normal way of writing। Now involving three variables is also very interesting। इसको थोड़ा सा आपको याद भी करना पड़ सकता है कि why we are taking this, what del 1 and del 2 and del 3 here are, right? This is something that you have to remember। The one way to do is कि देखो del 1 में क्या क्या है अपन ने, this तो you can remember, but यहाँ पे देखो, यहाँ पे it's very easy to remember। del 1 के अंदर आप फर्स्ट वाली कॉलम को चेंज कर रहे हो, del 2 में आप सेकंड कॉलम को चेंज कर रहे हो, del 3 में थर्ड कॉलम को चेंज कर रहे हो, and what are you replacing it with? The constant terms, राइट? एंड ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि ये जो इक्वेशंस थी वो किस फॉर्मेट को देख के लिखी गई थी। समटाइम्स यू नो व्हाट मिस्टेक इट इज, a1x b1y c1z एंड प्लस d0 ले लेता है, और इस इक्वेशन को लेके d का साइन आप चेंज करना भूल गए फिर आप मैट्रिक्स में डालने के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि हमने कौन से इक्वेशन फॉर्मेट के लिए मैट्रिसेस डिफाइन किए थे। ठीक, नाउ मूविंग ऑन। नाउ फॉलोइंग एल्गोरिथम इज फॉलोड टू सॉल्व द सिस्टम। Check the value of del। If del is non-zero, then the system is consistent। अगर अब del zero है तो हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर del zero हो गया तो हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर एक भी नॉन जीरो निकल गया तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा सोल्यूशन। मतलब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा मतलब कि जो इक्वेशंस है वो पैरेलली रन करती है, मतलब जो प्लेन्स है वो पैरेलल है। और अगर तीनों जीरो हो गए तो you get z is equals to t and solve any two equations to get the value of x and y in terms of t। ये अपना इसको सॉल्व करने का मेथड को हम क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल बोलते हैं। दिस वाज आल्सो टॉट टू अस एंड इट वाज टॉट बाय द नेम ऑफ क्रैमर्स रूल ओनली। सो नाउ वी जस्ट गो थ्रू सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू कैन रिमेंबर। जैसे कि अगर डेल जीरो है और ये डेल वन डेल टू डेल थ्री जीरो है तो दो चीज हो सकती है, तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और कंसिस्टेंट नहीं भी हो सकता है। So then if the values of x and y are in terms of t satisfy the third equation, then the system is said to be consistent and have infinite solutions। If x and y does not satisfy the third equation, then the system is said to be consistent and will have no solutions। Okay, so this is something यार, this is you get out of practice also। इसमें क्या बोला है उन्होंने कि पहले आप z को t कर दो और x और y को t के टर्म्स में निकाल दो, राइट? फर्स्ट टू इक्वेशंस वैसे, ठीक है? एंड देन यू पुट द z x y z इन द थर्ड इक्वेशन, और वो सेटिस्फाई कर रही है अगर इक्वेशन तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, और वो सेटिस्फाई नहीं करी थर्ड इक्वेशन तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं होंगे, यानी कि नो सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अगर d1 d2 d3 अगर जीरो है then the system of is known to be homogeneous linear equations which always possess at least one solution that is 0 0 and it is called a trivial solution। ठीक है, मतलब ओरिजिन तो पास कर ही रहे हैं तीनों प्लेन्स, और अगर तीनों प्लेन्स ओरिजिन से पास करें तो वो एक ट्राइवल सॉल्यूशन है व्हाटएवर यू से इट, एंड वो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस कहलाती है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, इफ द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस possess नो non-zero non-trivial solutions then del is zero। In such a case the given systems have infinite solutions। Okay, let's move on and do some questions guys, it's very easy to solve now। Solve the following equation by Cramer's rule। Okay, तो पहले del निकाल लेंगे। del निकाल लिया, del की वैल्यू क्या है, del वन निकाल लिया, del टू निकाल लिया, del थ्री निकाल लिया। तो क्रैमर्स रूल से अपन को पता है x क्या होता है, del वन बाय del, y होता है del टू बाय del। वेरी इजी, जस्ट एन एप्लीकेशन। लेट्स सी डू वी हैव एनी थ्योरी लेफ्ट। Okay, so differentiation integration is also important. Do we have time for this? Let me just check. We don't have the time for this. So I'll wrap it up। We'll try to cover this in the upcoming lectures, guys। ठीक है, एक बार मैं ब्रीफ करता हूँ। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत लाइक इट्स वेरी सिमिलर टू द नॉर्मल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दैट वी डू। जैसे कि अगर हमें दे रखा है डिफरेंशिएशन करना है किसी डिटर्मिनेंट का,
तो हम क्या करेंगे, पहले एक रो का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर एक दूसरी रो का करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार में दोनों रोज का डिफरेंशिएशन कर दिया, नहीं गेट द वैल्यूज। एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल, वो इक्वली एप्लीकेबल है कॉलम्स के ऊपर, बिकॉज वी नो ना रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हो, यू गेट द सेम वैल्यू, राइट? सेम गोes फॉर इंटीग्रेशन ऑल्सो, इट्स नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक, I'll just suggest you if you read it through once by yourself also, तो आपको समझ आ जाएगा कि what integration and differentiation is. And I'll share the link of the PDF if it's allowed for me. So आपको पता लग जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स भी है कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे नहीं सॉल्व करते, किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अप्रोच कैसे करते हो किसी भी क्वेश्चन को। अगर आपको क्लिक नहीं हो रहा है, क्लिक हो रहा है, इट इज ये आपको काफी हेल्प कर सकता है। फिर कुछ रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, कि अगर जैसे कि ये रिजल्ट देख सकते हो आप, ये देख सकते हो। So I'll wrap it up for you guys till here because I have already covered the topics that were discussed with me. But now we are left with integration and differentiation of determinants. We have not discussed any questions over that. तो अपन वो आगे वाले लेक्चर्स में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? So thank you guys. I'll leave it to you.